Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about pronouns. That is the words that are used in place of nouns. जिनको हम कहते हैं सर्वनाम. सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. So let's just begin with this pronouns. So the title of our chapter is the pronouns. You just rewrite these sentences using the pronouns in place of these colored nouns, right? Rohit is a student and Rohit goes to school. So Rohit is student and Rohit goes to school. Instead of writing Rohit, we can write he, right? So we can write over here, it's that key. I'm starting it from here because this blank is very short. So you can write that Rohit is a student, right? And he goes to school, right? Now the next one is Sachin and our friends, and Sachin and I played together. So you can write that Sachin and I are friends. I'm just underlining it over here. इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे that we played together. Right, I am just skipping this sentence and writing on my own because of the less space. Right, this is we. Right, now moving next is you just read and understand that कृष्णा इज अ फार्मर. कृष्णा एक फार्मर है. ही इज वेरी पुअर. देखिए हमने बार बार कृष्णा नहीं यूज किया. हमने क्या यूज किया है? ही. राइट, ही लिव्स इन अ विलेज विद हिज वाइफ. वो अपनी वाइफ के साथ विलेज में रहता है. एंड वन डे हिज वाइफ सेड, उनकी वाइफ ने कहा दैट आई वांट टू बाय अ काउ. मुझको एक काउ बाय करनी है. विल यू हेल्प मी? कृष्णा सेड यस. राइट, नाउ we will buy a cow on next Saturday. हम next Saturday को next Sunday को cow buy करेंगे. Now in the above sentences जो colored words है जैसे कि he, his, I, you, me, we all are used in place of nouns. और nouns क्या है? कृष्णा and wife. wife की जगह पे ये सब यूज हुए हैं और कृष्णा की जगह पे हमने ये यूज किए हैं. Hence these colored words they are known as pronouns. So thus we can say the words which are used in place of nouns उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Pronouns. Now moving on to is kind of pronouns. The pronouns are of 6 types and they are, the first one is the personal pronouns जो हमारे लिए use होते हैं. They are used in place of nouns. Of course, personal pronouns they are used in place of nouns. That is the subject and of course the object of the sentence. जैसे कि personal pronouns 3 type के होते हैं. There are 3 types. First is first person, then it's second person and the last one is third person. देखिए first person जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं. Cut. First person, the pronouns which are used for the person which is speaking they are called the first person. जैसे कि मैं खुद एक first person हूँ. I am going to school. मैं school जाती हूँ. Right, we are friends. हम लोग friend हैं. तो I, me, mine, ours, us, they are, ये सब क्या है? हमारे first person pronouns है. Right, second person जैसे आप मेरे लिए second person. The pronouns that I use for the person which are speaking to, हम जिनसे बात कर रहे हैं, they are called the सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस. जैसे कि यू आर अ मैजिशियन. आप एक मैजिशियन है एंड दिस मैजिक बैंड इज योर्स. ये मैजिक बैंड आपका है. तो यू एंड योर्स क्या है? दे आर दी सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस. मूविंग ऑन टू दी थर्ड पर्सन, द प्रोनाउंस दैट आई यूज्ड फॉर पर्सन स्पोकन. जैसे आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट सम थर्ड पर्सन. सो दे आर कॉल्ड दी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. जैसे कि ही इज रीडिंग. वो रीड कर रहे हैं एंड शी इज प्लेइंग. वो खेल रहे हैं. राइट, he, his, him, she, her, hers, is the it, they, theirs. ये सब क्या है? them, they all are third person pronouns. You just study the given table. हम यहाँ पे person के बारे में पढ़ेंगे. उसका subject, उसका object, उसकी possessive noun pronouns and possessive adjectives. देखिए first person कौन है? speaker. जैसे कि मैं. subject क्या है? I और we. और इसका object क्या हो जाएगा? me और us. possessive में mine और ours और possessive adjective में it's my और our. राइट, सेकेंड पर्सन वो होते हैं विच इज स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं. तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? यू. ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगेन इट्स यू. पोजेसिव प्रोनाउन इट्स योर्स एंड ऑफ कोर्स पोजेसिव एडजेक्टिव इज योर. राइट, थर्ड इज स्पीकिंग अबाउट. जब हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो इट्स ही, शी, इट, दे. राइट, इट, दे. राइट, देन इसका ऑब्जेक्ट होगा हिम, हर, इट, देम. इसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा हिज, हर, इट्स, देयर्स. राइट, एंड इसका possessive adjective होगा his, her, it's there. Right, now the second one is possessive. Possessiveness means belongingness. The person which are used to show that something
it belongs to person or possession, so they are known as possessive pronouns. इनको हम क्या बोलेंगे? Possessive pronoun. जैसे this book is mine, ये book मेरी है. That book is yours, ये book तुम्हारी है. This teddy is his, ये teddy उसका है. That doll is hers, ये doll उसकी है. Those bats are ours, ये वो वाले bat हमारे हैं. These grapes are theirs, ये उनके हैं. So all the pronouns which are written in color, of course, they are known as possessive pronouns. As the noun, they have 4 genders to the pronouns. So we have 4 gender. We will be studying the following table. The first person, जिसको हम common gender बोलते हैं, जैसे I am a boy and I am a girl. Second person में common gender है again. You are a boy and you are a girl. Third person में it can be singular masculine. That is, he is a good boy and this gift is his. He का क्या हो गया? His हो गया. Singular feminine में she is a nurse and the patients like her. उसको पसंद करते हैं. She का her हो गया. सिंगल न्यूट्रल में दिस इज अ डॉग, इट हैज लॉन्ग ईयर्स, इसके बहुत बड़े बड़े ईयर्स हैं. आई गिव इट बिस्किट्स टू ईट, मैं इसको बिस्किट्स देता हूँ. प्लूरल में सारे जेंडर्स आ जाते हैं. दे आर माई फ्रेंड्स एंड आई लाइक देम, राइट. सो देर इज अ नोट दैट अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो होते हैं, दे विल टॉट we will be teaching it in the next classes. So there is a short recap that pronouns, they are used for the nouns के लिए use होते हैं. Personal pronoun 3 टाइप के होते हैं, first, second and third person. Possessive pronouns हमें possession show करने के लिए मदद करते हैं. Pronouns which are used as a subject, object and possessiveness. Moving on to the exercise, first we'll be doing the correct option. So the pronouns, they are used for nouns की जगह use होते हैं. Personal pronouns जो होते हैं, they are of course, they are of 3 types. This is the second person, that is you, and this is a common gender pronoun, both of these, right? Now you have to circle the pronouns. I thought you know him, this is I, right? I is a pronoun. She wanted us to visit them, she. You told it to give it to him, उसको दे दीजिए. Again it's you. We live in India, we हो गया. They saw it moving towards her, देखिए they, right? He is going to take bath, he. It is raining yesterday, it. Father brought me a scooty, father जो है, they bought me a scooty. It will be me, right? So that was all about pronouns. Please do revise it, please do revise the previous concepts, and please keep reading hard for your exams, because it will definitely enhance your reading, speaking, writing. That is LSRW. It's LSRW, that is your listening skills, your speaking skills, your writing skills, and of course LS speaking skills. Okay, please do this and stay blessed. Thank you.